हेलो नॉलेज सीकर्स, वेलकम टू द करंट नॉलेज चैनल। मैं जिनल आज आपके साथ डिस्कस करूंगी 9 मई से जुड़े करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स की पीडीएफ फाइल आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन 1। व्हेन इज द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर ए 7th में, बी 8th में, सी 9th में, डी 10th में। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8 में। World Red Cross Day is celebrated every year globally on May 8th. The day is celebrated as the birth anniversary of the Red Cross and the International Committee of the Red Cross, Henry Donat. The day is dedicated to those who suffer from an epidemic including shortage of food, various natural disasters and war. Question 2. Who Bollywood actress will remain the Goodwill Ambassador of UNEP till 2022? कौन बॉलीवुड अभिनेत्री 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेगी? ऑप्शंस आर ए शिल्पा शेट्टी, बी दिया मिर्जा, सी दीपिका पादुकोण, डी अनुष्का शर्मा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दिया मिर्जा। Bollywood actress and environmentalist Dia Mirza is India's Goodwill Ambassador by the UNEP, whose tenure has been extended to 2022. Apart from this, the popular actress is also supporter of the United Nations Development Goal. Question 3. Recently, Rob Gibbs passed away. To whom did he belongs? हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थे? ऑप्शंस आर ए डायरेक्टर, बी स्टोरी टेलर, सी सिंगर, डी ए एंड बी बोथ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। The death of Rob Gibbs, a well-known director and who wrote the story of several Pixar animated films, he is known for many famous Pixar films including Toy Story 2, Finding Nemo, Monsters, UP, Wall-E, Inside Out, to Onward. क्वेश्चन 4. हु हैज लॉन्च द आयुष संजीवनी ऐप? आयुष संजीवनी ऐप का किसने शुभारंभ किया? ऑप्शंस आर ए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, बी होम मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर, डी प्राइम मिनिस्टर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। The Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan recently launched clinical research studies and Ayush Sanjeevani application on Ayush-based Ayurvedic methods for the treatment of COVID-19. Question 5th. Which state government has increased the retirement age to 59 years? किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर किया 59 वर्ष? ऑप्शंस आर ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तमिलनाडु। The government of Tamil Nadu has increased the retirement age of government employees, teachers, and those reducing employees in public sector units from 58 years to 59 years. After this decision, those who were supposed to retire on 31st May this year will now retire on 31st May 2021. Question 6. What is the name of Iran's existing currency? ईरान की मौजूदा मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शंस आर ए सियान, बी रायल, सी शिखेल, डी येन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रियाल। Iranian lawmaker voted on May 4 to change Iran's national currency from riyal to toman. Under the amendment law, the existing currency of Iran will continue to remain valid alongside toman for 2 years.
during which the old coins and bills will be gradually collected to replace them with new ones. Question 7. Which bank has hiked home loan rates linked to repo rate by up to 30 per basic points? किस बैंक ने 30 आधार अंकों तक के रेपो रेट से जुड़े होम लोन की दरों में बढ़ोतरी की है? ऑप्शंस आर ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी बीओआई, डी कैनरा बैंक. And the correct answer is option B SBI. The State Bank of India, which is the country's largest lender, has increased its home loan rates linked to repo rate up to 30 basis points amid market indications of rising credit risk amid coronavirus pandemic. Question 8. US firm Vista Equity Partners will be investing rupees 11,367 crore in which Indian company? अमेरिका की कंपनी वेस्टा इक्विटी पार्टनर किस भारतीय कंपनी में 11,337 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ऑप्शंस आर ए रिलायंस जियो, बी भारती एयरटेल, सी वोडाफोन आइडिया, डी बीएसएनएल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिलायंस जियो. Vista Equity Partners, a US-based firm, will soon invest rupees 11,367 crore into Reliance Jio platform for 2.32% stake. This will make Vista the largest investor in Jio platform, only behind Reliance Industries and Facebook. Question 9. Which state has suspended major labor laws till 1000 days to attract investment? किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए 1000 दिनों तक प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया? ऑप्शंस आर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली. एंड द करेक्ट आंसर इज डी उत्तर प्रदेश. The UP government has suspended most of its labor laws for 3 years to attract investment and help both existing and new industrial units. Question 10. When does the UN mark time of remembrance and reconciliation for those who lost their life during the Second World War? संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामान्य का समय कब चिह्नित किया? ऑप्शंस आर ए मई, बी अप्रैल 29-30, सी May 8 to 9, D May 1 to 2. And the correct answer is option C May 8 to 9. The United Nations marks the time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War every year on May 8 and 9. The day tribute to all the victims of Second World War. This is also marked as the historic event as it paved the way for the establishment of the United Nations. Question 11. Telangana has imposed how much fine for not wearing mask in public places? तेलंगाना ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिए कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आर ए ₹5,000, बी ₹3,000, सी ₹2,000, डी ₹1,000. And the correct answer is option D ₹1,000. The Telangana government has issued an order imposing a fine worth ₹1,000 for not wearing a mask in public places. The order has been passed to prevent transmission of COVID-19. Question 12. Who launched smartphone app Mahakavach to fight COVID-19?
कोविड-19 से लड़ने के लिए स्मार्टफोन ऐप महाबाग को किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आर ए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डी चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. And the correct answer is option C, Nasik Municipal Corporation. Smart City Nashik takes several measures and initiatives to fight COVID-19. The measures taken by Nashik Municipal Corporation launched the mobile application Maha Kavach. The app is real-time digital contact tracing mobile application. It enables citizens to contribute and assist the health authorities in contact tracing from a geofencing and tracking of quarantined COVID-19 patients. Thanks for watching. Subscribe our channel for more updates. Thank you and bye bye.